Hi everyone, Ashish Kyal here. Warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul, and I'm going to talk about markets. Very good evening, Bhavani Ram. आप सबसे पहले आते हैं लगता है यहाँ पर सुधींद्र, आपका नाम मैंने पहली बार देखा है सुधींद्र. आई एम नॉट श्योर, शायद मिस आउट हुआ होगा. कुणाल, सुमित, अंजलि, आप भी काफी एक्टिव है. दैट इज व्हाट आई कैन क्लियरली सी. सुशांता, अनिर्बान, आपका ट्वीट मुझे मिलता रहता है. अनिर्बान, अगर आप शायद ट्वीट करते हैं, आपका नाम सुना है मैंने. Rohit, Ravi, every one of you, very warm welcome. I'm going to talk about markets. I'm going to talk about Nifty. And before I move on to talking about markets and Nifty, I want to know how many of you are riding with me again this time for and touch the level of 24,728. So Nifty has touched the level of 24,728 and it has been absolutely fantastic, absolutely fabulous, where very few people were expecting it to happen. And देखिए आज हुआ. बहुत सारे जन है जो मेरे साथ राइड कर रहे हैं. श्याम इज राइडिंग, मयंक त्रिवेदी इज हियर, संदीपन आप तो राइड करते ही है, वो तो मुझे पता ही है बिल्कुल. एंड रोहित कुमार, great to have you also here. Absolutely amazing people who are there on YouTube. You can follow me on the Zoom platform. Here is the link for the Zoom. अगर आप Zoom पे जुड़ेंगे, यहाँ मैं पिन भी कर देता हूँ इसे, तो मुझे बहुत क्लियरली पता चलेगा कि आप हो यहाँ पर और मैं चैट देख पाऊंगा. सो आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड. सो व्हाट आई एम आस्किंग यू ऑल, इज इट अमेजिंग द वे द मार्केट्स हैव मूव्ड. काफी सारे जन जिन्हें प्राइस एक्शन और टाइम के बारे में पता नहीं है, वो ऐसे मूव्स को मिस कर जाते हैं. बैंक निफ्टी का एक मैं बता रहा हूं टाइम के बारे में. इफ वी लुक्ड एट सैटरडे, वी लुक्ड एट 2 times. लेट मी आस्क, कौन सी टाइम थी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की? कैन एनीवन टेल मी विच वर द टाइम ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है. आई कैन सी 10:15. फैंटास्टिक आशीष के, भवानी राम, 10:15 का था टाइम एंड इट हैज बीन सिंपली सुपर. 10:15 को निफ्टी ने एक लो बनाया था, मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको. निफ्टी ने एक लो बनाया था 10:15 के आसपास. वहां से वी गॉट अमेजिंग मूव ऑन द अपसाइड. थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड. संतोष चौबे इज सेइंग, सर यू प्ले निफ्टी लाइक अ गेम इन गॉड मोड. इट वर्क सुपर. और बैंक निफ्टी का टाइम था 145. बैंक निफ्टी रैलीड बाय मोर देन 550 पॉइंट्स फ्रॉम देयर. आई एम नॉट सेइंग आपने वो टाइम पे बाय किया होता, या प्राइस एक्शन भी इंपॉर्टेंट है. सो प्राइस एक्शन विद टाइम इज इंपॉर्टेंट. it is possible that you might have got an entry today because breakout आ जाए, still 300 points मिलता है बैंक निफ्टी में. मोर देन दैट, अरे यार मुझे मिला तो आपको तो मिलेगा ही ना. और निफ्टी पे इफ यू लुक एट निफ्टी वेंट अमेजिंग फ्रॉम दैट लेवल. It Nifty also rallied by I think around 350 points. So both Nifty and Bank Nifty yesterday time actually worked out amazing. मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था? आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट विथ यू ऑल, मतलब I'm going to be upfront and honest with you all. I was expecting यार मंडे मोमेंटम बनना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा था, साइकिल था, ओवरऑल बायस चेंज हुआ, तीनों चीज थी. तो मेरा एक्सपेक्टेशन था पूर्णिमा वाले दिन, लूनार साइकिल वाले दिन मोमेंटम बनेगा. ठीक है, कल नहीं बना, आज गैप अप के साथ निकाल दिया. तो इज इट ओके? चलेगा ना? मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा कि नहीं आप लोगों को? कि यार 115 145 का टाइम था, तो 145 से ही 500 पॉइंट रैली होना चाहिए था. यार मार्केट को मैं नहीं चला रहा, मैं मार्केट को खाली पढ़ रहा हूं. आई एम ओनली आई एम अ चार्ट रीडर, आई एम अ ट्रेडर, एंड मैं मार्केट को चला नहीं सकता. आप सब मिलके मार्केट को चला सकते हैं, हम सब मिलके मार्केट को चला सकते हैं, लेकिन अकेले तो नहीं चल पाएंगे. और ये भाव भगवान है. तो प्राइस इज गॉड, सो आई कैन नॉट आस्क प्राइस टू डू व्हाट आई वांट, राइट? नहीं तो मैं तो ऊपर ऊपर कहाँ पहुंचा दूं. तो आई कैन डू दैट because भाव भगवान છે. if that is the concept, you respect price, you respect time. समय बलवान છે, so you respect price and time and you trade it, and the result is in front of you. I also said it's not 100%. There is a possibility when it does not work, take a small hit, but when it works, make a killing. And look at it again, it worked. So it has been substantially the way it works, and it's miracle. किसी का कमेंट आया, great market reading, your analysis is so precise, thanks doc.
आपके काइंड वर्ड्स के लिए। नाउ आई डोंट, संदीप, एब्सोल्युटली। तो चलिए, अभी पता तो है कि गेन लेवल 24,728 आ चुका है। अब यहां से आगे क्या होने वाला है वो हमें देखना है। ठीक है, जो हो चुका। आप लोग ने राइड किया या नहीं किया तो मिस आउट हुआ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ, जो भी चीज हुई, यहां से व्हाट इज नेक्स्ट is what I'm going to show it to you right now. So I'm going to open up my trading view, and people who are there on YouTube, if you like this pure, so I'm not entertaining you, I'm talking pure science. I'm not talking about philosophy. I'm simply talking about a science that works, basis of which I trade. If it works for me, it will work for you, because that is how science works. But it's a science of probability. No 100%. When there is always a risk. When it does not work, take a small hit. When it works, make a killing. And today was a killer day. So and I'm going to go on the chart now. हमारा, before I move on to the chart, very quickly, हमारा जो ब्रह्मास्त्र सेशन है कल से डे 1 है, एंड डे 1 इट्स गोइंग टू हैपन विच इज वेडनेसडे at 7 p.m, not 7 a.m, 7 p.m. Please be ready. Are there people here from the Brahmastra latest batch? I'm sure, Bhavani Ram, you are there. And every one of you, be there, be ready. Tomorrow we are going to rock the world. I'm going to give you the Brahmastra. The शुरुआत हो जाएगी ब्रह्मास्त्र की, कि कैसे हमें ये पूरे मार्केट सिनेरियो में कैसे राइड करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे टाइम को सही तरीके से देखना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। और अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक सिलेक्शन एल्गो जो मैंने आपको दे रखा है यूज कर रहे हो, तो यू माइट बी रियली थरली एंजॉयिंग इट। सो आई एम गोइंग टू नाउ गो बैक on the chart, and I'm going to show you how it works and why it has to be applied in the correct fashion, and what is next from here for Nifty, basis of wave theory, why I think we might be in the lifetime high levels। ये सारी चीजें मैं आपको सामने अभी शेयर कर रहा हूं। Are you able to see my chart, every one of you? Are you able to see my chart, every one of you? Okay, awesome. So यहाँ पर निफ्टी का जो चार्ट है वो आप आवरली चार्ट पे देख पा रहे हैं। दिस इज प्योरली फ्रॉम द न्यू वेव पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग राइट नाउ, and I'm not going to talk from a bigger time frame. I'm talking from a shorter term time frame. This is the 55 days time cycle on which I turn bullish, कि यार 55 days आ गया है, नीचे जा नहीं रहा है तो ऊपर जाने वाला लग रहा है, and we got a good move from here itself। तो यार पैसा तो ऑलरेडी इन द मनी बन चुका है, अभी यहाँ से रिवर्स भी हो तो लॉस तो नहीं होगा, दैट इज व्हाट आई नो। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे, वी आर, मेरी आवाज लो आ रही है आप लोगों तक? एवरीवन इज एबल टू हियर मी आउट क्लियरली एंड लाउडली? आई एम जस्ट चेकिंग इफ माय वॉइस इज लो टू ऑल ऑफ यू, और इज इट लाउड इनफ? क्योंकि मैं तो बहुत एनर्जी में हूँ, मैं तो बहुत लाउडली बात कर रहा हूँ, बिकॉज जब मार्केट करता है वैसे जैसे लग रहा है तो मजा आता है। इट इज ओके, एवरीवन इज एबल टू हियर मी, फुल ऑफ एनर्जी, ऑसम गाइस। तो चलिए, यहाँ पर अभी अगर मैं देखूं तो ओवरऑल जो मार्केट ने वेव एक्स कंप्लीट किया नीचे की ओर, विच आई कीप टॉकिंग अबाउट, की क्योंकि टाइम साइकिल है, नीचे एक्स वेव कंप्लीट होगा। तो निफ्टी कंप्लीटेड वेव एक्स ऑन डाउन साइड, ओके, एज प्राइजेस रिवर्स्ड अप from 55 days time cycle. We might be headed towards next gain level. I'm going to show you gain chart, okay, about 25,000 eventually, and be ready to ride with me, because if you miss it, you will not know how to go about it later. You have to be here with me, you have to ride with me, okay? 25,361, fantastic. Nitesh Shah, he is also a Brahmastra participant. 25,361 is the next level that you have to look at on the upside. कहां पर आता है वो लेवल मालूम है आपको? 25,361 is here, so that's the gain level. I'm just going to make a horizontal line for you all. यहां पर मैं जाके डबल क्लिक करूंगा, एंड आई विल मेंशन इट हियर as the coordinate as 25,361,
दैट्स द गेन लेवल। एंड एक और गेन लेवल जो हमने मेंशन किया है, जो चल रहा है लाइक अ मैग्नेट, 24,728। दैट्स द लेवल, दैट्स वेयर वी आर स्टैंडिंग। आज का अगर मूव देखा होगा ना दोस्तों, 24,728 पे मैग्नेट की तरह अटक गया था। देखा आपने? 24,720, 724,728, 24,720। यार एक घंटे बाद मैं कोई मीटिंग में था, एक घंटे बाद देखा तो कहाँ है मार्केट? 24,720। मतलब यार क्या मतलब, आई वांटेड टू गो अप बिकॉज आई एम लॉन्ग, but I know, yeah, it will stop because it's the magnet that has stopped so many previous moves, and it is simply super. So that's the gain level that we are looking at. मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर बहुत क्लियरली कि कैसे ये लेवल्स के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर मैं मेरा बोर्ड कनेक्ट कर देता हूँ दोस्तों, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो what are the levels that we have to look at? 25,361, provided we break about 24,728। और इसमें एक और चीज मैंने बहुत क्लोजली कंबाइन की थी, वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल का चार्ट काफी समय हो गया हमने देखा नहीं है, मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल बता देता हूं बहुत ही क्विकली। वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पे पता चलता है यार, लोगों ने, बिग प्लेयर्स मूव द मार्केट। बॉटम लाइन, नो ईगोज हियर। जो बड़े लोग हैं, they move the market. What are these big players doing? Where are they accumulating? It's very important for us to see that. Now, how to see that is using this simple way of looking at Nifty futures contract. I'm going on Go charting platform, and I am going to show across my volume profile chart. Okay, volume profile chart. Before doing that, मेरा WhatsApp community आप लोगों ने ज्वाइन किया कि नहीं? नहीं किया तो व्हाट्सएप लिंक शेयर कर दीजिए सबके साथ में, सो दैट दे कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। क्यूआर कोड कहाँ गया मेरा व्हाट्सएप का? आई जस्ट चेक इफ आई हैव द क्यूआर कोड हैंडी, आई शेयर दैट क्यूआर कोड where you can join the community. Okay, I'm just checking. Okay, I think that's the QR code. Just join across this WhatsApp community, then I'll go to, give me a thumbs up once you have joined it, तो मुझे पता चले। Okay, okay, you have joined in the WhatsApp community, give me a thumbs up. Akhil Gupta wants to become a part of Brahmastra community. How can I join? Akhil, वो तो ब्रह्मास्त्र के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। आपका कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप करिए यहाँ पर चैट पे। माई टीम विल कॉल यू एंड हेल्प यू हाउ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर गुरुकुल। इसे कम्युनिटी नहीं कहते हम, इसे गुरुकुल कहते हैं। यू नो, गुरुकुल मीन्स यू लर्न नॉट फ्रॉम मी, you learn from everyone and we do it together. That's the fun part of it. So यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, everyone is a guru, everyone teaches and you learn from everyone. That's the thing. That's the beauty of Gurukul. Okay, अखिल गुप्ता को कॉल कर लीजिए so that he can be a part of the Gurukul. Okay, ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? Are you able to see the screen? Okay, and यहाँ पर if you're looking at this chart, this is the volume profile. वॉल्यूम प्रोफाइल हम बहुत डिटेल में जो करते हैं ना, वो त्रिशूल प्रोग्राम में करते हैं। त्रिशूल इज एनीवेज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र एनीवेज, सो ये हम बहुत डिटेल में करते हैं। मेहर सुधीर को भी डिटेल्स चाहिए फॉर द ब्रह्मास्त्र, विल टॉक अबाउट इट। सो यहाँ पर आपका नंबर, माय टीम विल कॉल यू। बिंद्रा को भी चाहिए, सो नो प्रॉब्लम गाइस, वी विल टॉक अबाउट इट। सो वो सारी चीजें करेंगे, माय टीम विल जस्ट कोऑर्डिनेट विथ यू राइट नाउ। यहां पर अगर आप ये चार्ट देख रहे हो, आई टर्न सुपर बुलिश ऑन द 55th डे, और होने के बाद नहीं, होने के पहले की बात है। आई मेंशन्ड ऑन सैटरडे, मंडे इज द डे, इफ यू मिस इट यू मिस इट। एंड जिन्हें ट्रस्ट नहीं था, दे मिस्ड इट एंड नाउ दे आर रिपेंटिंग। जिन्हें ट्रस्ट था, दे मेड मनी एंड आउट ऑफ द मार्केट इफ यू वांट टू बी। So the bottom line is, it is not about, so understand, trading is not about the method. Trading is also about psychology. You know the science, but do you have the patience to hold on at the right time? If yes, then you make money. If you lose patience, then you lose money. If you
become patient enough, then you still lose money. Are you getting my point? अगर आप बहुत ज्यादा पेशेंट हो गए कि नहीं मैं तो रुके रहूंगा, मार्केट नीचे जा रहे जाने दो, मैं लॉन्ग में रुका रहा हूं, तो स्टिल यू लूज मनी. यू हैव टू हैव द राइट मिक्स ऑफ इट. यू हैव टू हैव द राइट इंग्रेडिएंट ऑफ इट. अगर आपको हलवा बनाना है, ठीक है, बजट में पहले भी बनते हैं हलवा. इफ देर इज रॉन्ग अमाउंट ऑफ शुगर, घी, if you don't cook it well, if you overcook it, if you undercook it, it will not taste in the proper proportion. If only you mix each ingredient properly, you will be able to make money from the markets. Same like how you cook a halwa. So that's how it happens. And when I look at it, this volume profile, it gives me a lot of insight. It tells me the major accumulation by big players happened at 24,350 levels. Why? Because this level is point of control. It is known as point of control. Point of control का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको. This is futures level, which is more or less 20-30 points plus minus हो रहा है premium. This is point of control. This is where major volume happened. Look at the volumes here. It's tremendous. It's huge. मतलब कुछ तो बड़ा हुआ है 24,530 पे. Do you agree with me? I am not saying, see, I am okay. I want to understand. This does not require rocket science. Clear है? कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए. वॉल्यूम है ना यार. वॉल्यूम तो आपको भी जो दिख रहा है मुझे भी वही दिख रहा है. What I am asking you, can I say 24,350 is the level where something major happened? Yes or no? ठीक है? Don't just agree with me. I am asking you to disagree with me so that I can explain you more. What I am saying is, this is the level where the major volumes have happened. Cumulative basis volume. Are there people on the chat? I am not getting the chats. I don't know if you are getting it or not. What I am telling you is, this is the level which is also the level of major traders have taken it. The positions, which means this was the area of accumulation by big players. And this is the volume which is substantial. So what you see on the right hand side is known as volume profile, which we look at it to understand वो दिन पे cumulative volumes वो period में कितना हुआ. Okay, that's one. Secondly, we then look at the next volume area from this level of 24,000, जो आप देख रहे हो चार्ट पे, वहां से next volume happened precisely. Huge volumes happened. Now, what is very interesting to see, सोचने वाली बात ये है, ठीक है, I'm going to show you something very interesting basis of volume profile. If you're looking at this, can I say highest volume, this is the volumes for the day. Can I say the highest volume happened here? Which means at the end of the day, highest point of the day, volume happened. Okay. Can I say the next day, volume again happened at the same price point? Can I say the volume again happened at the same price point, which is 24,595 level as per future? तो अराउंड 24,550 के आसपास स्पॉट लेवल हो. सो कैन आई से यार इसका मतलब हुआ अराउंड दिस एरिया 24,550 का जो जोन है is a very important zone. I am deriving price action looking at volume profile now. How to get this indicator? I will not be able to tell you now. I will teach everything. Vinay, you are a part of Brahmastra. उसमें हम करेंगे ना डिटेल में. Which volume profile, which indicator, कल करेंगे सब. हमारा सेशन है कल. Okay, you just have to be patient with me. We'll do that. Right now, I'm just showing you the application of it. So if you're looking at it, Nifty, I'm just going to write it down. Nifty major volume, okay, major volume accumulation happened at 24,350 levels. एंड रीएक्यूमुलेशन. सो एंड रीएक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है, वहां पर वापस से बाय हुआ. रीएक्यूमुलेशन हैपेंड एट, व्हाट इज द रीएक्यूमुलेशन, जस्ट अ सेकंड.
Okay, one moment. The accumulation happened at, I'm writing it down for my reference, 24,595 futures. So the upside is now open unless we move below this volume area. This is the best application of price action. Application of price action has to be done in this way. Volume price action is the most important way in which you can learn. Volume price action is the way. लोग खाली प्राइस एक्शन देख रहे, प्राइस एक्शन वर्ड इतना कॉमन हो चुका है यार, हर एक यूट्यूबर वो कर रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आता है। मतलब पैटर्न देखा तो प्राइस एक्शन, कैंडल देखा तो प्राइस एक्शन, हैंगिंग मैन देखा तो प्राइस एक्शन, आई एम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर। बॉस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस एक्शन? डू यू इवन अंडरस्टैंड दैट? Everything is price action any which ways. Correct. Now, every single thing that you see on the chart is price action, but not only price, it is time action also. It is volume action also. Because these three things are happening together: price action, price time, and volume. I'm now showing you volume, price, and time. You anyways know. So, unless I see a move back below today's low, close below today's low, I will stay bullish. If tomorrow it closes below today's low, then I might start getting that maybe some reversal sign. लेकिन इसके ऊपर कहां पर हर्डल है वो देखते हैं। इसके ऊपर का हर्डल कहां है वो देखते हैं। आर यू विथ मी? सो वी नो दिस टू लेवल्स। लेट मी नाउ लुक एट, नाउ लेट मी आस्क यू, यू हैव टू हेल्प मी आउट, ठीक है? आई एम शोइंग यू समथिंग एज अ पजल. That's how I teach my mentees also. A puzzle. Market is a puzzle. And I am asking you for help. Tell me, do you see? Think about it before you answer. Do you see major hurdle at this level? Yes or no? Let me see. कौन सही आंसर दे? Is 24,830 a major hurdle? Yes or no? 24,830, is it a major hurdle? Yes or no? I'm asking. Think about it before you answer. Think. Major hurdle मतलब major resistance है क्या वो level? Is it a major resistance? Not just price action. It has to be accompanied by volume. Think again. Look at the charts again. Okay. I'm going to give you the answer. Or is this the major hurdle? Okay. Now let me ask you and rephrase my question. Can I say major support is 24,350? Why do I say with so much conviction, so much confidence that the major support is 24,350? Why do I say that? Tell me. Why 24,350 is the major support which no one can debate? I want to know on what basis. That no one can debate? Because that's where the majority of the volumes happen. Fantastic, fantastic, each one of you. That's where the maximum volume happens. Simple science. Okay. Now let me ask you, what is the volume comparatively at 24,840? Can I say it's only 1/4 of the volume that happened at 24,350? Can I say that? The volume is relatively extremely less. तो मतलब प्राइस को ऊपर जाना डिफिकल्ट नहीं है, हर्डल है, गैप एरिया है, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं लगी. दैट्स व्हाट आई कैन सी. समझ में आया हाउ आई एम सीइंग इट? मेहनत ज्यादा नहीं लगी ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए मेहनत ज्यादा लगी. नाउ टेल मी, आर यू ट्रेडिंग ऑप्शंस? Can I form an option strategy basis of this? If I know this thing, I don't know anything else. If I only know how to read the volumes in correct way, can I form an option strategy? Of course.
क्योंकि मुझे पता है नीचे जाने में मेहनत लगेगी, तो मतलब पुट बेच सकते हैं। ऊपर जाने में मेहनत नहीं लगेगी, तो मतलब ऊपर का आउट ऑफ द मनी कॉल बेच के हेज कर सकता हूं मैं। You can play around with this data in options. That's why I said my mentees who are not trading in options also, I will make you an option trader, because you can do so many things more than you cannot imagine with options data. So many things you can do, which you can't even imagine. So which means I'm not saying option sell ही करके पैसा बनाना है, कॉल बाय कर सकते हैं, सिंथेटिक ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं। बट सिंपल वे में कॉल बाय करो या फ्यूचर बाय करो, और जहां पर हर्डल दिख रहा है उधर के ऊपर का ऑप्शन को राइट करो। सो दैट्स हाउ यू हैव टू लुक एट इट। ओके, आर यू विथ मी? सो ये तो है वॉल्यूम पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। देयर इज समथिंग नोन एज वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, कितना डेटा लेना है, बिकॉज वॉल्यूम्स विल कीप चेंजिंग विथ मोर और लेस डेटा। You will have to apply it correctly, how to look at its stocks. There are a lot of things. There is the shape of the volume. There is a lot of things that you can look at it. But I'm not going into detail of that. I'm going back to my Neowave chart. I'm just saying this exists. Uh, this exists, which means it works. I'm now going on an hourly chart of Neowave. Now with this chart of wave theory, we are at a very important level. Okay, as per the gain level. As per the gain level, this is important. 24,728. So I'm going to keep a close watch tomorrow. Okay. Yeah, in the morning I mentioned 24,650, and once it breached, you will have a rocket, and you got it today. So if you're looking at this chart, this is the Nifty Neowave chart, right? Let me show you from the bottom of the election period. And we completed here. We completed a fall here in the form of an X wave. यहाँ पर ये कंप्लीट करने के बाद में we are now riding on the upside. My take is lifetime high. My bet is 25,361 is where we are headed from here on. And यहाँ पर once we breach above this mandate. Now the problem is 24,728. यार प्रॉब्लम है मेरे लिए, गेन लेवल है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई वांट इट टू बी ब्रीच्ड, आई एम बुलिश, आई एम बायस्ड। सो बट मुझे पता है रुकेगा, तो मैंने क्या किया मालूम है आपको? मैंने कॉल बाय करके उसके ऊपर का कॉल बेचा हुआ था। कहां पर? 24,260 के आसपास ही। सो व्हाट आई डिड इन ऑप्शंस व्हेन निफ्टी वाज अराउंड 24,260 300, यू रिमेंबर आई टॉक्ड अबाउट 2 days बैक 24,250 के ऊपर बाय करना है। Guys, are you with me? Do you check my Twitter? Do you check my WhatsApp? Do you check my app? 24,250 के ऊपर मैंने कहा था कि उधर बाय करना है। एंड आई नो यार 24,728 के उधर हर्डल है, क्योंकि यार गेन है। तो क्या किया? आई बॉट एट 24 अराउंड 260 के आसपास इन एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। आई सोल्ड अराउंड 24,800 का ऑप्शन। So what I am doing is I'm translating my research into my trades by forming this strategy, because I know it's going to stop there. So I'm making even on 24,800 if it expires below that. If it goes above it, I'll still will end up making 400 points, which is like, wow, 500 points, which is super in just 3 days of time. So it works that way. So that's how you have to look at it. I have not squared off Nalini. Why will I square off? क्योंकि मैंने जितना कॉल खरीदा उतना कॉल बेचा है। I'm locking in the profit. If it goes above the 24,800, I'll still be making how much I was anyways making. So I'll make the most of the trend unless it still rockets up. So I keep adjusting my position to keep to ride on the upside. And bank nifty मैंने कहा था bank nifty will lead from here. मेरा tweet भी था bank nifty is going to lead from here, and look at bank nifty today. Bank nifty was up much more than what nifty was. So bank nifty can take a lead. So this is Neowave chart. If you're looking at this chart, what we are seeing right now is nifty Neowave chart suggesting that a break about 24,750 will open the possibilities for 25,361. That is the next gain level, as there are very less price action volume area.
about 24,750. Now, do you understand when I make a statement, it has some meaning to it. When I say lifetime I आ सकता है, it is Neowave, it is time cycle, it is GAN combined together with volume price action. That's the way it has to happen. That's the way it has to happen. So this is how it has to work. This is the it's not the divided part. That's why I keep saying in Brahmastra, in Trishul program, it's a complete setup that how it works. Making sense? Every one of you, are you with me? So we are expecting that ना until when. मैंने targets तो बता दिया, लेकिन कब तक, कितना, stop loss क्या है? So for me, we should not close below today's low. We should not go below the level of 24,350. If we breach below 24,350, गड़बड़ है. ठीक है, मतलब कुछ तो चेंज हुआ, बड़े प्लेयर अटक गए 24,350 के नीचे. You people think only we get trapped. Big players also get trapped. How will they get trapped? Big players will get trapped if 24,350 breaches, which means the pain can be very fast to everyone. Because they will reverse position, we will reverse position, lot of things will change below 24,350. And to take that out, it has to be gap. It will not go without gap. So it has to be gap, it has to be event, it has to be news, it has to be something big. वो निकालने के लिए वेट करेंगे. उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना यार. लाइफ में कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा कि नहीं. रिस्क है तो इश्क है, बट रिस्क सिस्टमेटिकली लेना चाहिए. रिस्क आंख बंद करके लोगे तो नुकसान होगा, रिस्क सिस्टमेटिक लोगे तो पैसा बनेगा. दोनों में फर्क होता है. So that's how it is looking like. I think markets are in a very classic state. I am expecting a good up move. Bank Nifty should lead from here, and we have just started the up move. This is very similar setup to the 5th of June. I mentioned it. It's Purnima. It's 55 days. It's 15 minutes. It's 43 cycle. It's multiple time in sync together. Multiple time in sync together. Okay, it's very very important, and I'll look at it. So I'll be discussing about my trades, personal trades, tomorrow in day one of mentorship. I'm just going to be now briefing about what we are going to do in mentorship. बैंक निफ्टी के न्यू वेव काउंट्स हम कल मेंटरशिप में देखेंगे, ब्रह्मास्त्र में देखेंगे. 7 बजे का टाइम है दोस्तों. आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू एड्रेस each one of you for the mentorship program, and it's going to be starting tomorrow at 7. We'll look at risk money management. We'll look at the stocks sector you have to focus on. Which stocks leaders will lead from here, मैं आपको बताऊंगा. You will have to focus on that. I'll teach you certain techniques of stop loss management, volatility based. वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और ये सारी चीजें हम करने वाले 7 बजे. तो आप तैयार है ना कल के लिए. और 7 से 10 होगा, ब्रह्मास्त्र का सेशन है. एंड यूजुअली ऑन दिस डे आई ट्रेड लेस बिकॉज आई वांट टू कंजर्व माय एनर्जी टू स्पीक विथ यू ऑल. You know, that's how I'm dedicated to you all who are a part of Brahmastra session. Okay, I'm open for questions, guys. Any questions? If you have questions, you can do that. And दोस्तों, मैं एक बहुत ही quickly poll ले रहा हूँ. If you are a part of Brahmastra, then just to let me know if you are a part of Brahmastra, which is starting tomorrow, and if you are or not. If rate cut, then Bank Nifty will come down. क्यों? रेट कट होगा तो बैंक निफ्टी नीचे क्यों आएगा, या रेट हाइक होगा तो बैंक निफ्टी नीचे क्यों आएगा? We'll discuss about it in the Brahmastra session. Why, how rate, RBI action, does it impact? If yes or no, I'll discuss that. So we'll be doing it tomorrow. Ram is excited. Absolutely, you are also a part of Brahmastra. Ram has joined the Brahmastra session also. He is also excited. And homework किया कि नहीं आप लोगों ने यार? मैंने एक बेसिक टेक्निकल्स का 12 घंटे का वीडियो दिया था, आप लोगों ने देखा कि नहीं? Ram Vishnoy is wanting to join Brahmastra. तो एक लिंक है which you can click on the link. Please share across the link with everyone if they are wanting to be a part of it. कर लिया कंप्लीट आपने? MOTA कंप्लीट किया? आई कैन क्लियरली सी. गाइस रिप्लाई मी, ऑल द ब्रह्मास्त्र पार्टिसिपेंट्स. होमवर्क जो दिया है वो करना है तो करना है.
रात भर जाग के करो, दिन में करो, ऑफिस में करो, कि कहीं भी बैठे हो वहां करना है आपको। 12 घंटे का वीडियो कंप्लीट करना है, दैट इज मैंडेटरी विच आई हैव गिवन टू यू। दीपक हैज कंप्लीटेड दैट। एवरीवन, आई वांट टू नो। अस्त्र में सेशंस नहीं है जसबीर, जो लाइव सेशंस है वो ब्रह्मास्त्र में। अस्त्र के बारे में भी जसबीर पूछ रहे। यहाँ पर धीरज वैश्य, मेंटरशिप का आपको डिटेल्स मिल जाएगा। मेरा एक ऐप है दोस्तों, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक शेयर कर दीजिए। वहां पर हमारी एक अस्त्र की मेंबरशिप है विच इज फॉर 1 ईयर मेंबरशिप। एंड कूपन शायद क्लोज हो गया होगा, आई एम नॉट श्योर, विल हैव टू चेक विद द टीम बिकॉज वी हैव got one of the best responses for Astra also. In case there are people who are been a part of it, so Astra का response आपको मिल गया होगा, and you can download the app. You'll get all the details from there. And Sundaram is a part of Astra and Brahmastra. Fantastic, Sundaram. So it's not compulsory. Astra is not mandatory for Brahmastra participants. It's up to you. उसके अंदर क्या मिलता है? Brahmastra में we do the live trading, we do the live sessions, we do the complete handholding for lifetime. You will have the entire mentorship program. You'll learn the science of time, wave theory, club it across like I am doing. You will be able to forecast like I do forecast on Twitter. Everything is Brahmastra. Along with stock selection algo, along with senior mentees guiding, handholding, this is all Brahmastra. And Astra में आपको it's a 1 year membership in which you will get Elliott Wave का course, you will get powerful trade setup का course, you will get one strategy in the month which will work. Strategy course है वो. Okay, that's a strategy. Plus you will get Nifty research for a year where you will be able to see what the market research is looking like, and you will get monthly research वो publish होने वाला है. So it will be there. Bang on in Astra, yes, of course, क्योंकि वो जो strategy है वो अस्त्र में मिलती है. तो Brahmastra is Astro का अस्त्र, and Astra is about strategy, which will work for that month. So both are different, completely different approach, and one is making you the weapon. Brahmastra is making yourself the weapon. Okay, empowering yourself. You will be able to do whatever you want in life. That is Brahmastra. Okay, that's the difference. Astra is fighting the battle with the Astras for that month. That's what Astra is. Okay, Kunal Bajaj, you have a question with Elliott Wave, please ask. I have some time, I think. Wow, it's already 40 minutes. You know that 40 minutes already also. I'll take up one question. Guys, if you have any questions, and if there are people who are with me for producers, Avastra का seats full हो गया क्या हमारा? If yes, then we will have the coupon will expire. If I'm just asking you, I'm asking you, my colleague, if it's still the coupon is still valid, because I thought the coupon has expired already. Time flies away, right? Yes, I know. Mitesh, I joined yesterday the membership for 12. Do you have a separate group? No, Mitesh. For Astra, there are no groups. It's for Brahmastra. For Astra, you will get the details on the app inside that. Okay. In case you are traveling, the recordings will be available for the Brahmastra. So don't worry on that. Fantastic. ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चंस? सो मार्केट का व्यू क्या है? मार्केट का व्यू बुलिश है। कल हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर डिप मिलता है तो बाय करो। 20 डिप नहीं, 24/750 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट पड़ा हुआ आएगा। ट्विटर लिंक शेयर कर दीजिए, ट्विटर पे फॉलो करते रहिए। आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग अक्रॉस पीपल ऑन यूट्यूब। इफ यू लाइकिंग व्हाट वी आर डूइंग हियर, डू इंश्योर दैट यू आर subscribing the channel, putting your comments there, and I am loving it. So it's going to be fabulous. It's going to be fantastic. And if you want to be a part of Brahmastra, I'm going to share across a QR code with you also. You can just scan through your camera and my team will help you out. If you want to be, if you are not a part of Brahmastra and want to be a part of Brahmastra, so ये QR code मैंने scan करके share किया, यहाँ पर आप check कर लीजिए. And there is someone who is asking for the EMI link. Please put it across for the EMI. And Nalini, thanks for the kind words. Really appreciate. You have been a part of Gurukul for long, so I really appreciate that. And साथ ही में
someone wants to pay a token amount. Are we still taking the token amount? I thought we are not anymore. Okay, but okay, if there are a few more, then I don't really want that to happen, because we want to be bang on with Brahmastra starting tomorrow, and you have to be going through the homework that I have given you. If you can't, then you shouldn't be a part of it. Okay. अभी साहू आपका क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया. You might have to post it again. I don't know. कुणाल बजाज आपका क्वेश्चन नहीं आया मुझे. There are a lot of people. What is the difference between Brahmastra and Trishul, Meher? Trishul is about Neowave, Neowave, and Options Mantra. These three programs forms Trishul. Brahmastra forms, Trishul is a part of Brahmastra. Plus in Brahmastra, there is tradership, which is hand-holding completely, which is about all of those techniques applied together is what this is. कुलवजीत को टोकन अमाउंट पे करना है. प्लीज एक काम करिए, टोकन लिंक शेयर कर दीजिए सभी के साथ में, कुलवजीत के साथ में भी कर दीजिए. राम, सुबह अगर आप 12 घंटा नहीं कर पाएंगे तो एक काम करिए, वहां पर डे 1 का वीडियो मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में है. डे 1 में 3 घंटे का वीडियो जो आप अगर देख पाए, अराउंड 2 घंटे का वीडियो, 2 से 3 घंटा, तो एटलीस्ट वो बेस हो जाए. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, आप 12 आवर्स नहीं कर पाएंगे तो इट्स ओके. आपने आज ही ज्वाइन किया है, वो 2 घंटे का वीडियो देख लीजिए, अगर आप उतना टाइम स्पेंड कर पाए. नहीं तो एनीवेज टुमारो दिस इज एटलीस्ट to ensure कि I push you. So I am going to push you in Brahmastra to your core limit. So I'm going to not stop. I'm going to keep pushing you, keep pushing you, keep pushing you until you get there. Okay? So be ready for hard work for 3 months, 4 months, and you will have to be open for that. Okay? So link दे दीजिए to इन्हें भी. Rushabh has been a part of it. फैंटास्टिक ऋषभ. कवलजीत को लिंक शेयर कर दीजिए, उन्हें डीएम कर दीजिए, सो यू कैन डू दैट. कुणाल, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पा रहा है. देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट्स हियर. इज दिस रैली ऑन निफ्टी 50 लुक्स लाइक वेव बी from Elliott wave or Neowave perspective? Because from Neowave it's not B. From Elliott wave, if you're asking me, this is not B. From Elliott wave, this looks to be start of the 5th. So it's not B. Rushabh, yeah, I know. He's part of it. Okay, fantastic. Sudhir is also a part of it. Fantastic to Sudhir. He part of the people who are a part of it. Please ensure that Kulvajit ko token link chahiye. Please share the token link. What I just missed out the question. So people who didn't get time to go through Master of Technical Analysis 12 hours of video for Brahmastra, you can go through day 1 of 2 hours to 3 hours of video. That will set you at least for tomorrow. So because हम जो स्टॉक सिलेक्शन एल्गो क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर वो काम आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ. अगर उसमें वॉल्यूम प्रोफाइल भी है डिटेल में, सो यू गो थ्रू दैट एंड वी विल बी लुकिंग एट इट इन डिटेल. ओके, आईटीसी टाइम साइकिल कल बात करते हैं. चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही. बहुत बहुत मजा आता है आप लोगों से मिलके. हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर. इट वाज फैंटास्टिक टू हैव यू ऑल हियर एंड सी यू टुमारो एट 7. थैंक यू, बाय बाय. आशीष क्याल साइनिंग ऑफ.